Hey guys, good morning and welcome to Frontier Gaming, and it's your boy RJ is back with another new video. And this video is very helpful for the returning players as well as F2P as well as new players. और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ टियर 2 सिलेक्टर को लेकर। सो अगर आप रिटर्निंग प्लेयर हो, अगर आप F2P हो, अगर आप न्यू प्लेयर भी हो, तो इन सभी के दिमाग में एक क्वेश्चन रहता है कि टियर 2 सिलेक्टर किसको चॉइस करूँ। बहुत से ऑप्शंस है और किसको चॉइस करूँ, ये सब करते करते तो वो लोग ऐसे कैरेक्टर को चॉइस कर लेते हैं जो उतने अच्छे हैं नहीं, या फिर उनका कोई प्रॉपर यूज़ भी नहीं है, ना कोई अच्छा लीडरशिप, ना कोई अच्छा टीम पैसिव, और उस कैरेक्टर से वो लोग हाई भी नहीं जा सकते। मीन्स इन फ्यूचर अगर आपको लंबा जाना है इस गेम में, देन यू शुड नीड दोज काइंड ऑफ कैरेक्टर्स. Okay, so let's start the video. And well, I'm talking about the 10 characters, top 10 characters. This is my list. I will make that list that you should have those kind of 10 characters in your team, or maybe 2 or 3 characters should you have in your team, because those characters are really good. Some are good with their leadership, some are good with their passive skill, some are good with the high damage, high DPS. सो सब कुछ मिला के मैंने ये जो लिस्ट है मैंने चॉइस किया है. सबका वीकनेस भी, कुछ का वीकनेस है, कुछ का फर्स्ट टॉप 5 का तो वीकनेस का कोई मायने नहीं बनता है, लेकिन कुछ का पॉजिटिव साइड भी है, कुछ का नेगेटिव साइड भी है. तो सब कुछ मैं यहाँ पे डिस्कस कर दूँगा गाइस. सो उम्मीद है कि आप ये वीडियो लास्ट तक देखो तो आपको अच्छा लगेगा. मे बी आपको एक आइडिया होगा कि कौन सा कैरेक्टर को आपको बिल्ड करना चाहिए, कौन सा कैरेक्टर को नहीं. जिन लोगों के पास ये कैरेक्टर्स नहीं भी है तो उन लोगों के लिए भी एक हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि खैर वो लोग ये कैरेक्टर्स को बिल्ड करेंगे. अगर मैं उसके पैसिव स्किल या लीडरशिप स्किल के बारे में अगर बता दूँ, तो अगर उसको नहीं पता है तो खैर आप लोग भी जान सकते हो यहाँ से. सबसे पहले मैं यहाँ पे अपनी टीम में जाता हूँ. आप देख रहे हो कि मैं यहाँ पे 10 कैरेक्टर्स जो है उसे मैं फेवरेट्स करके रखा हूँ. सो चलो वन बाय वन मैं इन्हीं 10 कैरेक्टर्स के बारे में बात करूँगा. एक्चुअली टियर 2 सिलेक्टर आप बहुतों को कर सकते हो. ये तो टॉप 10 है जो कि मैंने पिक किया है. इसके साथ साथ मैं और 5 कैरेक्टर्स के बारे में बताऊंगा जिनको आप एज ए टियर 2 सिलेक्टर चॉइस कर सकते हो. सो सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो है मेरा सूरी. मैंने सूरी को क्यों चॉइस किया एज ए टियर 2 सिलेक्टर. बहुत लोग कहेंगे कि नो, सूरी वॉज नॉट दैट मच गुड एज ए टियर 2 सिलेक्टर, बट मेरे हिसाब से सूरी वन ऑफ द बेस्ट है. इन अगर बात करें पैसिव स्किल, अगर बात करें सपोर्ट कैरेक्टर का, तो यस सूरी बहुत बढ़िया. और ये सभी इसमें मैक्सिमम कैरेक्टर्स जो है आपको बायो सिलेक्टर से मिलेंगे. मैक्सिमम कैरेक्टर्स यू विल गेट फ्रॉम द बायो सिलेक्टर, सो दे विल नॉट अवेलेबल इन द डायमेंशन शॉप. सो आई विल रिक्वेस्ट यू दैट वन थिंग, दैट don't get those kind of characters, don't make those kind of characters tier 2 which bios you can get from the dimension shop. सबसे पहले मैं डायमेंशन शॉप में जाके बस दिखा देता हूँ कौन कौन से कैरेक्टर है, कौन कौन से कैरेक्टर नहीं. सो ओके, सपोर्ट शॉप. ओके, एक्चुअली सपोर्ट शॉप. सो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कॉम्बैट टाइप में ये सभी कैरेक्टर्स यहाँ पे अवेलेबल है. इन्हें टियर 2 सिलेक्टर चॉइस करने की ज़रूरत नहीं है. कुछ को है, इनको है मैं बता दूंगा. स्पीड टाइप, यूनिवर्सल टाइप, ये सभी कैरेक्टर्स को यहाँ पे दिया गया है. तो जिन कैरेक्टर्स के बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो लोग शायद यहाँ पे सपोर्ट शॉप में नहीं होंगे. ओके, तो सबसे पहले मैं था सूरी के ऊपर. सो लेट्स चेक आउट why I choose सूरी as a tier 2 selector. This is my first pick. और सबसे बड़ी बात यह है कि सूरी जो था वो मेरा पहला tier 2 selector भी था जब मैंने गेम को खेलना स्टार्ट किया था. तो सॉरी गाइस. तो चलो देखते कि उसके अंदर क्या ऐसी एबिलिटी है कि मैं बोल रहा हूँ कि tier 2 selector से सूरी को कर सकते हो. सूरी बहुत ही ईजीली यूजेबल है, बहुत ही आसानी से आप उसको यूज़ कर सकते हो. वो सूरी आपको वर्ल्ड बॉस अल्टीमेट से लेकर APX GBR में आपको बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट देगा. और ये जो शूरी है वो आपको शैडोलैंड में काफ़ी ज़बरदस्त हेल्प करेगा, काफ़ी ज़बरदस्त. क्योंकि शूरी विद द सूट और विदाउट द न्यू सूट, शूरी इज़ रियली गुड. ओके, मैं क्यों बोल रहा हूँ, सबसे पहले तो मैं इसका पैसिव स्किल आपको दिखा देता हूँ. आप देख रहे हो इसका पैसिव स्किल, टियर 2 पैसिव स्किल जो है वो है पैंथर गॉड्स प्रोटेक्शन, जो कि अप्लाई होता है ऑल एलाइज के ऊपर.
ये सुपर विलेंस के ऊपर 35% ऑफ डैमेज इंक्रीज करता है, और सुपर विलेंस से आप 25% ऑफ डैमेज लेस रिसीव करोगे। इन सुपर विलेंस से आप कम डैमेज रिसीव करोगे, लेकिन आप सुपर विलेंस को 35% ऑफ डैमेज आप कर सकते हो। ओके, और अगर आप शूरी का जो ब्लैक पैंथर वाला सूट है, अगर आप वो लेते हो, ब्लैक पैंथर मूवी में जो सूट यूज़ हुआ था वो लेते हो, तो उसमें जो होता है, जो डैमेज डिल्ट तो जो सुपर विलन टाइप होता है वो 45% बढ़ जाता है, एंड डिक्रीज द डैमेज रिसीव फ्रॉम द सुपर विलन टाइप कैरेक्टर वो 35% हो जाता है। मीन्स 10% बोथ इंक्रीज होता है, डैमेज डिल्ट एंड ऑल्सो डैमेज रिसीव्ड। ओके, एक में बढ़ जाता है, एक में थोड़ा सा घट जाता है। सो यही चीज़ जो है आप देख रहे हो कि विदाउट न्यू सूट शूरी इज़ रियली अमेजिंग। तो आप समझ सकते हो कि शूरी कितना बढ़िया सपोर्ट कैरेक्टर के रूप में आपको हेल्प कर सकता है, और ये ऑल एलाइज के ऊपर अप्लाई होता है, हीरो एलाइज एज वेल एज विलेन एलाइज। और इसका जो पैसिव स्किल है वो है इग्नोर टारगेट डॉज रेट बाय 30%। ओके, टीम पैसिव, इसको आप वर्ल्ड बॉस अल्टीमेट में एज स्ट्राइकर भी यूज़ कर सकते हो, एज मीन्स एली स्ट्राइकर। और इसका जो लीडरशिप स्किल है, लीडरशिप स्किल उतना बढ़िया नहीं है, वो सिर्फ ऑल स्पीड को इंक्रीज़ करता है ऑल एलाइज का। सो लीडरशिप उतना खास नहीं है, बट ये वाला जो स्किल है एज टियर 2 पैसिव रियली अमेजिंग। सो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि शूरी को आप ले सकते हो एज ए टियर 2 सिलेक्टर, और शूरी आपको आराम से शैडोलैंड के 40 to 50+ स्टेजेस करके देगा विद दिस यूनिफॉर्म। मैंने इस यूनिफॉर्म के साथ शूरी के साथ किया भी है। सो यस, शूरी इज़ माई फर्स्ट पिक। लेट्स गो टू द सेकेंड वन। सेकेंड वन इज़ आयरन हैमर। Iron Hammer is very good character and very easily usable। बहुत ही आसान है उसको यूज़ करना। इसका जो इसका जो क्यों मैं इसको बोल रहा हूँ, इसका जो टियर 2 पैसिव है वो सिर्फ सेल्फ के ऊपर अप्लाई होता है, स्किल डैमेज, बोनस डैमेज प्लस लाइटनिंग डैमेज इंक्रीज। इसके साथ साथ अगर आप देखा जाए तो पैसिव स्किल देखोगे इसका, ये लाइटनिंग डैमेज के अगेंस्ट 100% इम्यून है, जो कि सेल्फ के ऊपर अप्लाई होता है। बट if you saw his leadership skill with the infinite power, you can see it will apply to all allies। ये all allies के ऊपर अप्लाई होता है। इसमें 3 चीज़ें हैं, वाह 3 चीज़ें देख पा रहे हो, 3 चीज़ें हैं यहाँ पे। एक चीज़ है जो डिक्रीज स्किल कूल डाउन बाय 24%, 15% इंक्रीज ऑफ एनर्जी अटैक एज वेल एज इंक्रीज ऑफ लाइटनिंग डैमेज बाय 15%। सो 3 चीज़ें यहाँ पे है, और तीनों की तीनों चीज़ें बहुत ही हेल्पफुल है, वेरी हेल्पफुल दोस्त 3 थिंग्स। सो एज ए लीडरशिप स्किल आयरन हैमर इज़ रियली गुड। हाँ, आयरन हैमर का जो वैल्यू है वो डिप्रिशिएट कर चुका है, बिकॉज आयरन हैमर इससे पहले अगर आप लाइटिंग डैमेज और 140 160 का भी प्रॉक देते हो तो वो इबॉनी मॉ का जो स्टेज है वो आसानी से कर देगा, आसानी से, बहुत ही आसानी से कर देगा, बहुत ही फास्ट कर देगा। लेकिन जब से साइलॉक आया है, जब से स्कारलेट विच आई है, जब जैसे कि माइंड डैमेज टाइप कैरेक्टर्स आए हैं, तब से आयरन हैमर का जो है वो आयरन हैमर का जो वैल्यू है वो डिप्रिशिएट कर चुका है। बट आई होप इन फ्यूचर ही विल गेट सम काइंड ऑफ रीवर्क, एंड हु नोज इन फ्यूचर ही गेट some kind of awakened skill or as well as some kind of tier 3 skill, but it's far away, so we have to wait for it. But yes, you can choose Iron Hammer as a tier 2 selector because he is good. He has all defense down. You can see this in his 5th skill, 5% of decrease of all defenses. In the 4th skill, 1% of decrease of all defenses. He got recovery 3%, only 3%. I would be happy if it's 5%. And the stun effect and shock damage, everything he has. Okay, so yes, if you pick Iron Hammer, then you don't make any mistake. He's a good character, and you can use him also in Shadowland. Also, you can use him as in World Boss Ultimate as a striker. Okay, so my next pick is Morgan Le Fay. This is my 3rd pick. Morgan Le Fay is not that much strong, but why I pick, because in ABX the female universal super villain day, जब फीमेल यूनिवर्सल सुपर विलन डे आता है ABX में, तो तब बहुत लोगों के पास नहीं होते हैं, और वैसे भी यूनिवर्सल टाइप सुपर विलन फीमेल बहुत ही कम है। प्रॉक्सिमा मिडनाइट है, एक है आपका हेला, दूसरा है आपका विक्टोरियस, और तीसरा है आपका मॉर्गन ले फे। मतलब यही 4 कैरेक्टर मेरे हिसाब से स्ट्रॉन्ग है
अगर देखा जाए तो हेला को रिवॉर्ड मिलना चाहिए, मे बी इन फ्यूचर उसे मिलेगा भी। मॉर्गन ले फे को भी हम सोच रहे हैं कि उनको भी मिल जाए मॉर्गन ले फे इज़ अ डिसेंट कैरेक्टर। आई वोंट से शी इज़ वेरी ओवर पावर टाइप कैरेक्टर, नो she didn't, she is a decent character. And if you look at his tier 2 passive skill, it only applies on his self. It resets skill cooldown for skill, sharp waves, cooldown to 5%, and you can see this also applies for the self is 30% of all attack. Defense for the summoned characters. She has summon characters, so yes, it will increase the 30% of increase all attack and defenses, 30% of increase max 30% increase to HP, 30% duration increases summon characters, and also skill damage and the bonus damage. Okay, and then I will go with this team passive. Wow, this is really amazing that whenever Morgan Le Fay dead, she will recover with his 50% of his max HP. जब मॉर्गन ले फे मर जाता है तो वो 50% ऑफ मैक्स HP के साथ रिवाइव हो जाती है। ओके, सो गाइज आई एम सॉरी, मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, यहाँ पे प्रॉब्लम मैं करता हूँ ऑब्वियसली, आता है इसमें। सो गाइज प्लीज़ इग्नोर इट। और खैर इसमें जो इसका जो सेकंड स्किल है उसमें 7% ऑफ रिकवरी ऑफ मैक्स HP है। इसका एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ ये है कि अगर ये मर जाती है फिर वो रिकवर होकर आती है, ठीक है, 50% ऑफ मैक्स HP। आप सेकंड स्किल यूज़ करके उसके जो HP है उसको आप फिर फुल कर सकते हो। और जब भी अगर आपने उसका HP फिल कर दिया, व्हेनेवर यू फिल हिज HP बार एंड देन शी अगेन डाई, देन शी अगेन revived. Because why? Because he has full HP, and when he die after the full HP bar is after the HP bar is filled, जब वो HP bar fill हो जाता है फिर वो मर जाती है तो फिर से वो रिवाइव हो सकती है। सो उसको मारना इतना आसान नहीं है, लेकिन यस टाइमलाइन बैटल के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। शैडोलैंड के लिए शी इज़ रियली अमेजिंग। उसके बाद अगर देखा जाए तो हाँ, एज शैडोलैंड के लिए वो सबसे, और ये जो इसका जो लीडरशिप स्किल है वो सबसे बढ़िया है। वो डिव ऑफ ड्यूरेशन जो है वो 25% कम कर देता है और इज अप्लाइज टू ऑल लाइज। सो दिस इज़ ए नॉट अ बैड लीडरशिप, गुड लीडरशिप ऑल्सो। और इसका जो ये वाला जो है 4 स्टार पैसिव रियली इज़ अमेजिंग। 50% ऑफ मैक्स HP के साथ वो रिवाइव होकर आता है। मीन्स अगर वो मर भी जाती है, सपोज मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, अगर सपोज ये HP जो है 26,000 है, अगर वो मर भी जाती है तो 13,000 HP के साथ शी रिवाइव्ड। एंड देन व्हेनेवर यू यूजिंग हिज सेकंड स्किल time to time and whenever she got 26,000 HP back again and again suddenly she dies somehow, then she again back up. I think so. I think maybe in a ABX I think she revived twice. I think one time I do this and she revived twice. So yes, this is his 4-star passive skill is really amazing. So Morgan Le Fay is another good choice. I would recommend you that, well, I will told you that she's not that much powerful, but she is a decent one and she's helpful in ABX. You can do easily to 200,000 to 250,000 or 300,000 score with the help of Morgan Le Fay. Well, I go to the next one. Nope. Sorry, this is my 4th pick. It's Dr. Voodoo. Dr. Voodoo is really amazing. Why? Because he has awesome leadership. His tier 2 passive is also applied to self. It's not that good. It's self and fire damage immunity, skill damage, increased skill damage plus bonus damage. But look at his leadership skill. It will increase the all buffs of the all allies effects by 40%. Means it will increase your critical rate, critical damage, attacks, everything. Means it's all debuffs. It's allies to all debuffs. So leadership skill is really amazing. And Voodoo is very good with Deadpool and the Sabertooth. Voodoo Deadpool और Sabertooth के साथ टीमिंग अप में काफ़ी ज़बरदस्त है। सो वुडू और डेडपूल का जो कॉम्बिनेशन है वो सच में डेडपूल के पावर्स कई गुना
इंक्रीज कर देता है. इन वॉल्वोस अल्टीमेट डेडपूल बिकम्स रियली अ बीस्ट. इफ़ यू हैव डेडपूल्स हॉलीडे पार्टी यूनिफॉर्म देन आपको पता ही होगा कि डेडपूल क्या कर सकता है, क्या कर सकती है एक्चुअली. सो वूडू का जो लीडरशिप है वो काफ़ी ज़बरदस्त है. वो ऑल एलाइज के ऊपर अप्लाई होता है. ऑल डिबफ इफेक्ट्स पर 40% इंक्रीज कर देता है. सो ज़बरदस्त है ये. ऑल अटैक्स, क्रिटिकल रेट, क्रिटिकल डैमेज, ये सब कुछ 40% इंक्रीज कर देता है. सो यस, वो आप ज़रूर चाहोगे कि ऐसे कैरेक्टर आपके टीम में हो जो ऑल एलाइज या किसी अच्छे कैरेक्टर्स का जो कॉम्बिनेशन सबसे बढ़िया वूडू का होगा डेडपूल और सेवरटूथ के साथ. अगर आपके पास डेडपूल है जैसे मेरे पास है तो मैंने देखा है कि सच में डेडपूल वूडू लीडर एंड डेडपूल एज ए स्ट्राइकर ये सच में कमाल कर देता है विद द हेल्प ऑफ फिल कोल्सन भी बहुत ज़बरदस्त है उसका टियर 2 पैसिव. सो ये कॉम्बिनेशन जो है काफ़ी ज़बरदस्त है. सो यस, वूडू इज़ माई 4th पिक. आप वूडू को चॉइस कर सकते हो. ओके, सो नेक्स्ट पिक. सो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि वूडू का जो 4 स्टार पैसिव है वो है 90% चांसेस ऑन द अटैकिंग एंड एनिमीज़. ये एनिमीज़ के ऊपर अप्लाई होता है कि वो 25% डिक्रीज ऑफ ऑल अटैक करता है और अप्लाई टू सेल्फ इज 10% रिकवरी ऑफ मैक्स HP. I don't know why my dog is barking, but maybe something happened there. So ignore it. Let's go to the next character. Yes, my 5th pick will be War Tiger. War Tiger is very good, and War Tiger is a very good character, and he has some kind of native tier 2 type HP recovery. Because look at his passive skill, he can HP activation rate when HP is below than 99% is applied to self. 1.5% recovery of max HP for 1 seconds. इसका टियर 2 पैसिव स्किल जो कि सिर्फ सेल्फ के ऊपर अप्लाई होता है बट बहुत इजीली वो मतलब यूज़ कर सकते हो आप इसको. इसका जो लीडरशिप है वो जो डिक्रीज स्किल कूल डाउन फॉर 24% ऑफ ऑल एलाइज के ऊपर अप्लाई होता है. सो यही चीज़ है. और अगर आपका अवेकन स्किल देखें तो यहाँ पे ऑल डिफेंस डाउन है, ऑल अटैक इंक्रीज़ है, ऑल डिफेंस इंक्रीज़ है. सो और इसमें ख़ास क्या चीज़ है, इसके जो स्किल्स है जैसे कि यहाँ पे स्टर्न इफेक्ट है, उसके बाद 4th स्किल में भी स्टर्न इफेक्ट है. ऑल अटैक, ऑल डिफेंस जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है. इनफैक्ट द ब्लीड डैमेज इन एवरी 1 सेकेंड, रिमूव इलास्टिसिटी फॉर 5 सेकेंड्स. और इन द 5th स्किल, इस 5th स्किल में सब कुछ है. स्टन, बाइंड, फियर, इम्यून टू ऑल डैमेज, 50% चांसेस ऑफ इम्यून टू ऑल डैमेज विच अप्लाइज टू सेल्फ. काफ़ी ज़बरदस्त है. और आप वॉर टाइगर, अगर आपके पास वॉर टाइगर 5 स्टार भी हो तो आप आसानी से Shadowland कर सकते हो. इनफैक्ट you can use War Tiger against Proxima Midnight and Corvus Clave in the initial stages like 1 to 10 or maybe 1 to 15 stages. You can easily do this War Tiger. And War Tiger has ability that native tier 2 कैरेक्टर्स की तरह उसकी HP जो है वो रिकवर होती जाती है, जैसे कि Wolverine हो, जैसे कि Deadpool हो. So this kind of character is really good. You should need in your team that kind of character. So 5 to go. So let's go to the next character. My 6th pick will be Minerva. Why I choose Minerva the 6th pick? Minerva is really good. Minerva is a super villain combat, a super villain female and without that uniform Minerva is okay type, but with the Captain Marvel's uniform Minerva is beast. Minerva is really amazing, and whenever you facing ABX day with the female super villain combat type you should need Minerva, because with that uniform Minerva easily do 300,000 for me I think, because Minerva is not that much built. So 300,000 easily she can do. But if the proper proper CTP or proper obelisk, she is really very dangerous. With that uniform she is decent, but with the new uniform she is really amazing. She's become a beast. Look at this, his tier 2 passive is only applied to self. It will increase his dodge rate, increase damage, increase bonus damage, decrease all damage received. And let's check out his
passive one is also increased the dodge rate. It's also very selfish. और ये जो होता है इसका जो लीडरशिप स्किल है वो भी अच्छा है. No, not now, man. The all allies decrease debuff duration by 24%. So this leadership is really good, जो कि all allies के ऊपर होता है और decrease debuff duration by 24%. So okay, not that bad. और जो मिनर्वा है उसके पास हाई डैमेज है और उसके पास थर्ड स्किल में जो है ऑल अटैक ऑल डिफेंस और स्पीड इंक्रीज, क्रिटिकल रेट इंक्रीज होता है, इनकैपिटेशंस है, फोर्थ स्किल में स्टन है, ऑल डैमेज इम्यूनिटी है, जहाँ पे वो विद डेथ सूट यहाँ पे वो अचानक से उड़ के जाती है और जहाँ कहीं से 2 गाड़ियाँ लेकर आती है और घूमते हुए मारती रहती है, जिससे एक चीज़ होता है कि वहाँ जो अपने एनिमीज़ होते हैं वो एक ग्रुप में आ जाते हैं. एंड द फिफ्थ स्किल इज़ रियली गुड, पैरालाइज विद द एनिमीज़ एंड ऑल्सो इंक्रीज द फिजिकल अटैक. So not that bad, one of the good choice. So this is my 6th pick and now I'm going to the 7th pick. Oh yes, here we go. Is SheHulk, but for the SheHulk you need a fantastic 4 uniform. Well, SheHulk's passive skill only apply to self, but her leadership is really good. Is increased damage dealt to the male type of character by 60%. Wow, that's good, because she also helps you in ABX, in World Boss Ultimate, in GPR, because maximum characters are the male types, and if you want to damage those kind of characters, so you lead SheHulk, and you can see the SheHulk's leadership is all allies to apply, and it's increased damage dealt to the male type character by 60%. So this is a great leadership. और अगर आप SheHulk को चॉइस करता है टियर 2 सिलेक्टर, देन यू डोंट रिग्रेट एनीथिंग, बिकॉज यू शुड हैव लीडरशिप ऑफ SheHulk विद द स्ट्राइकर ऑफ शॉन रॉजर्स and with the support of Phil Coulson, and you can do Galactus, you can do Master Mold with the easy way. और खैर इस सूट के साथ भी SheHulk को रियली अमेजिंग फैंटास्टिक 4 सूट आपको लेना होगा SheHulk, क्योंकि विदाउट दैट सूट SheHulk इज़ नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग. SheHulk Shadowland के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, वेरी यूजेबल, ईजी टू यूजेबल इन Shadowland. उसके जो फिफ्थ स्किल, सभी स्किल में आप देख पा रहे हो, कुछ में स्टन है, कुछ में ऑल डिफेंस डाउन भी है इन थर्ड स्किल, और साथ ही साथ फिजिकल डैमेज. बाकी सब थर्ड स्किल और फोर्थ स्किल काफ़ी ज़बरदस्त है. फिफ्थ स्किल भी ज़बरदस्त है, जहाँ पे वो गाड़ी लेकर आती है और गाड़ी घुमा के मारती रहती है. सो इट्स जस्ट अमेजिंग. लीडरशिप स्किल वॉज वेरी गुड, और मैं लीडरशिप स्किल की वजह से ही मैं SheHulk को यहाँ पे रिकमेंड करने वाला हूँ. सो आई डोंट हैव एनफ काइंड ऑफ, आई थिंक देयर आर 3 more characters left. Okay, it is my 8th pick will be KORATH. KORATH will be very good. KORATH has a very high damage and speed type supervillains. Whenever you facing the ABX and speed type supervillains, then KORATH will be a very good choice, because you can see this, his tier 2 passive skill applied to self. It will increase his critical rate, dodge rate, skill damage plus bonus damage. And well, KORATH can do Shadowland stages very easily, maybe in 30 to 40 times easily, 40 times easily. So I don't know what I talking about, but yes, he can clear the Shadowland stages with the solo, maybe in just 30 seconds and 40 seconds. He's that much strong. Without in tier 2 he can do this. In T1 also, T1 he's equally strong, and whenever you make him to the tier 2, he is really amazing. And tier 2 passive skill, you can see this is also applied for the self and also applies to the enemy with this shock damage for every damage every 1 second, for 3 seconds, paralyze. So really amazing. And his leadership skill is not that much good, it's just increase the all speed to the all allies 10%, but with the with damage prop he's really good. He's really good. So we have last 2 left, so let's go. Okay, number 9 and number 10 are related from the Spider-Man Far From Home supervillains. One is the Molten Man. It's very easy to use him, because it also
Nothing special on him, but still he's good for Shadowland, and also is good for ABX, because ABX is a fire type, and fire type has a high damage to the ice type for the giant frost or ice frost beast or whatever you say. So you can see this, decrease all damage received, skill damage, bonus damage, 100% chances of immunity to all damage for 5 seconds, so that's not bad at all. And then the passive skill, you can see this, 70% chances of immune to the fire damage, increased damage dealt to the 30% from the skill to flame type characters. Wow, good. And the last one is, you can see this increases all defenses 45%. So his leadership is not that bad. If you using some characters which have less defense, then you should make him as a leader, because it will increase the all allies 45% increase of all defense. So this is not that bad leadership. Come on, GC Tommy Chan, I'm not gonna accepting this right now. I'm a bit busy. So this is the thing, Molten and Molten is easily do Shadowland stages. You can see this, the paralyze, ignore immunity, stun effect, in the stun effect for 3 seconds. And then the third skill, fourth and fifth skill is really good. Fourth skill has stun, bind, burn damage, and the fifth skill, you can see this, fear, bind, stun, everything he has. So yes, he will be another good choice if you choose him as a tier 2 selector. And guys, we are in the last. Hydroman is one of my pick, and he's also a good character for Shadowland. Come on, man, this is one of a good character for Shadowland. Well, you can see this is all applies to self, and look at this passive skill also apply for self, and it's increases size all attacks. And his leadership is the bleed immunity, fracture immunity, and also 20% increase of physical defense. Well, decent character, good for Shadowland, and also you can use him as a striker also in World Boss Ultimate. But well, he's not that much strong, but still a decent one. So those kind of top 10 characters, but still there are some characters in the game who can help you, or you can choose him as a tier 2 selector. One is well, where is Venom? Venom will be a very good character. If you have this uniform of anti-Venom, then he is really good, very helpful in World Boss Ultimate, because he will helps you he will help you to recover your HP with the symbiote pieces, and whenever you collect those symbiote pieces, your HP gets increased. So Venom is a good choice, but you should need that uniform. Next one, Werewolf is another good choice, good character, very supportive character. Look at this tier 2 passive skill. It will increase the critical damage 30% and guaranteed critical rate to the 20% is all allies. So really great. And his passive skill only is for when dealing a critical attack, is applied to self, is 10% of recovery of max HP. And the leadership skill is also applied to all allies. It will, when enemies are below 30% of HP, it will increase the critical rate and critical damage. So wow, so you can see this in the leadership skill, he also have critical rate and critical damage increase. And in the tier 2 passive skill, you can see this critical damage and increase guaranteed critical rate, and it's applied to all allies. And whenever you use a fifth skill, it will invincible for 1 second, and it increase all attacks, all defenses, all speed, critical rate, remove incapacitation. You can see the character usage steps. The Howl of Mars will transfer to allies who tag in, and making it lethal when used in combination with other allies. Means whenever you use this
his skill, and whenever he howl like a wolf, like oh wolf, and then you swipe to the another character or swipe to your main character or striker character, and then you can see the magic. सच में गाइस ये मैंने ट्राई किया है गाइस, सच में ये ज़बरदस्त है, क्योंकि ये उसके जो अटैक्स है, क्रिटिकल डैमेज, क्रिटिकल रेट है, वो काफ़ी बढ़ा देता है और काफ़ी ज़बरदस्त डैमेज होता है गाइस, लिटरली अमेजिंग। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एक और कैरेक्टर को मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ, वो कहाँ, वेस्ट इज़ अनदर गुड कैरेक्टर। इसको भी आप ऐसे टियर 2 कर सकते हो, लेकिन इसका जो बायोस है वो डायमेंशन के सपोर्ट शॉप से आपको मिल जाएगा। इसका टियर 2 पैसिव स्किल है, वो ऑल एलाइज के ऊपर अप्लाई होता है, रिमूव ऑल डीबफ्स फॉर 20 सेकेंड्स। लीडरशिप स्किल है, सो ये भी ऑल एलाइज के ऊपर अप्लाई होता है, ऑल अटैक, ऑल डिफेंस, ऑल स्पीड। पैसिव स्किल भी ये है, इसके जो एनिमीज के ऊपर अप्लाई होता है, जो कि साइलेंस फॉर 5 सेकेंड्स एंड पैरालाइज फॉर 2 सेकेंड्स। So Wasp is not a bad choice if you choose her as a tier 2। Wasp भी बहुत बढ़िया है, इसको भी आप एज ए tier 2 चॉइस कर सकते हो। और जो मैंने बोला था लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिल कोल्सन को इसलिए मैंने टॉप 10 में नहीं रखा क्योंकि फिल कोल्सन इज़ वेरी वीक, एकदम बकवास कैरेक्टर है, शैडोलैंड में भी किसी काम का नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इसका जो चीज़ जो अच्छा है वो है इसका टियर 2 पैसिव, जहाँ पे गारंटीड क्रिटिकल रेट इंक्रीज होता है, इंक्रीज क्रिटिकल डैमेज टू सुपर विलेंस 45% and damage received from super villain type is decreased by 15%। That's it। और तो और इसका जो लीडरशिप है वो सिर्फ है, इसका स्किल कूल डाउन जो है वो 30% डिक्रीज होता है। That's it। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, इसीलिए मैंने बाकी कैरेक्टर को वहाँ पे रखा, क्योंकि they are useful, they are better than Phil Coulson। सो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। मैंने इतने सारे कैरेक्टर्स के नाम बता दिए, कैरेक्टर्स के काम बता दिया, मतलब मीन्स क्या वो कर सकते क्या नहीं कर सकते आपको बता दिया। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जो रिटर्निंग प्लेयर है या F2P है या न्यू प्लेयर्स है, होपफुली दे विल आई थिंक आई विल हेल्प देम अ लॉट। So if you like this video, if you enjoy this video, then don't forget to like this one। and अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो then please subscribe my channel and support me, motivate me। I won't disappoint you guys। मैं आप लोगों को डिसअपॉइंट नहीं करूँगा, मैं ऐसे ही नए वीडियोस बनाऊँगा। मुझे लगा ये वीडियोस बनाने के लिए, मुझे लगा था ये वीडियो मुझे देना चाहिए, कि बहुत से प्लेयर्स को मैंने देखा है कि सपोर्ट में कोई भी चीज़ नहीं लेते, भले उनके स्ट्राइकर्स अच्छे हो लेकिन उनके जो सपोर्ट है बहुत ही बेकार है। सो मेरे हिसाब से मुझे लगा कि मुझे उन लोगों को ये चीज़ बताना चाहिए। सो ये उन लोगों को भी हेल्प करेगा जिन लोगों को सपोर्ट कैरेक्टर के बारे में पता नहीं है। सो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।